गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है 2025 G20 लीडर्स समिट। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो 2025 की G20 लीडर्स समिट है, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई है। और ये पहली बार ऐसा है कि G20 समिट जो है वो अफ्रीका में हुई है। तो ये जो समिट हुई है, इसमें जो डेक्लेरेशन है वो स्टार्ट ऑफ द समिट पे ही अडॉप्ट ही कर ली गई थी, एंड में नहीं अडॉप्ट की गई है, क्योंकि ऑलरेडी जो है शेरपास इसको नेगोशिएट कर चुके होते हैं, फाइनलाइज कर चुके होते हैं। इस डेक्लेरेशन ने जो है वो अफर्मेशन ऑफ मल्टीलैटरलिज्म को अडॉप्ट किया है और कहा है कि G20 किसी एक सिंगल कंट्री के एब्सेंस से पैरालाइज नहीं हो सकता। अब क्या थीम्स रहे हैं इसमें, प्रायोरिटीज़ क्या रही हैं, कमिटमेंट दिखाई है यूएन चार्टर में। मिनिमल रेफरेंसेस हैं इसमें रशिया यूक्रेन वॉर की, गाज़ा कन्फ्लिक्ट की। सिंगल लाइन कंडेमनेशन है टेररिज्म पर। इंडिया ने इंश्योर किया कि ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स भी जो हैं इसमें एड्रेस किए जाएं, और एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म ऑफ यूएनएससी को भी करने को कहा गया है इसमें। रीअफर्म की गई है कमिटमेंट टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। अब इसके अंदर बैलेंस डिप्लोमेसी है। कैसे? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो यूएस की तो एक्नॉलेज की गई है, लेकिन रिजेक्ट किए गए हैं यूएस के क्लेम्स ऑफ जेनोसाइड ऑफ वाइट फार्मर्स, जो कि साउथ अफ्रीका में वो कह रहे हैं एज बेसलेस। तो इंडियन पीएम ने आर्ग्यू किया है कि करंट इकोनॉमिक मॉडल जो है वो अपन हमारे रिसोर्सेज जो है उनको उससे डिप्राइव रखता है लोगों को, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है नेचर की। इसलिए हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है डेवलपमेंट को। तो इसीलिए इंडियन पीएम ने दीनदयाल उपाध्याय जी की इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जो कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और सोसाइटी को प्रमोट करता है, उसको उन्होंने प्रमोट किया है और एक तरह से एक ऑल्टरनेटिव दिया है वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ का। ठीक है। अब इसी के साथ कई इनिशिएटिव्स जो हैं इंडिया ने प्रपोज किए हैं, जैसे ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी, G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव, और भी बहुत सारे किए गए हैं। जिसमें कि एक और है इंडिया के डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स अगर हम देखें, तो ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया जो है पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी इनोवेशन, एआई, क्लीन एनर्जी और सप्लाई चेन रेजिलियंस पर अनाउंस की गई है। अब जो डेक्लेरेशन है वो ट्रेड वॉर्स को भी नोट कर रही है, जियो इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, इनइक्वालिटी, अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल इकोनॉमी, इन सब को भी जो है वो इसमें नोट किया गया है। लेकिन कोई भी मेंशन जो है यूक्रेन गाजा कन्फ्लिक्ट का नहीं है। अब हाई इंटरेस्ट रेट जो सेम रिस्क प्रोफाइल के डेवलपिंग नेशंस से चार्ज किया जाता है, उसको भी चैलेंजेस बताया गया है। यूएस साउथ अफ्रीका की भी टेंशंस हैं। G20 जो कि रिस्पॉन्सिबल है फिर मेजॉरिटी ऑफ एमिशंस के लिए क्लाइमेट चेंज में, वो अभी तक कोई कलेक्टिव एक्शन नहीं ले पाया है। ठीक है, ये कुछ चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, 4 लेबर कोड्स। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चारों लेबर कोड्स को नोटिफाई कर दिया है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट लेबर रिफॉर्म्स हैं ये सिंस इंडिपेंडेंस। अब ये कोड्स 2019 में ही पास हो चुके थे, लेकिन प्रोटेस्ट चल रही थी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की, तो जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने एनी हाउ इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया है। तो इसमें अगर हम कुछ की फीचर्स देखें, स्टेचुटरी रिकग्निशन मिल रही है पहली बार गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और एग्रीगेटर्स को। आधार लिंक यूएएन नंबर जो कि फुली पोर्टेबल होगा माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। अब सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस का भी प्रोविजन है इसमें। जो एग्रीगेटर्स हैं वो 1 से लेकर 2% ऑफ एनुअल रेवेन्यू जो है वो सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस में देंगे। ठीक है। नेशनल फ्लोर वेज, एक मैंडेटरी टाइमली वेज पेमेंट का कंसेप्ट भी लाया गया है इसमें, और बेसिक पे कंपोनेंट को भी जो है वो रीडिफाइन किया गया है और इंक्रीज़ किया गया है। विमेन को अलाउ किया गया है कि वो नाइट शिफ्ट्स में काम कर सकती हैं, अंडरग्राउंड माइंस में काम कर सकती हैं, हैवी मशीनरी ऑपरेशंस कर सकती हैं कंसेंट और सेफ्टी कंडीशंस के साथ। फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप जो है वर्कर्स एज्ड ओवर 40 के लिए लाया गया है। सिंगल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस एंड रिटर्न सिस्टम जो है वो सिंप्लीफाई करने के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वो इंट्रोड्यूस किया गया है। अब सीआईआई ने तो वेलकम किया है इन कोड्स को, लेकिन जो ट्रेड यूनियंस है वो इसको एंटी वर्कर और प्रो एम्प्लॉयर बता रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा ने रिसेंटली इमेजेस निकाली हैं कॉमेट 3I एटलस की, जो कि एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। कहा गया है कि ये एक बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? वो सेलेस्टियल बॉडीज़ जो ओरिजिनेट होती हैं आउटसाइड द सोलर सिस्टम और ट्रैवल करती हैं थ्रू इट, और ये ग्रेविटेशनली बाउंड टू ए स्टार होती नहीं है। ठीक है। तो आउटसाइडर और सोलर सिस्टम से आती हैं ये,
और ये ओपन एंडेड हाइपरबॉलिक ऑर्बिट में मूव करती हैं। ये इतनी तेज़ मूव करती हैं कि सन की ग्रेविटेशनल पुल इनको स्लो डाउन नहीं कर पाती है। ठीक है। अब इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स जो है हमें क्लूज देते हैं फॉर्मेशन और एवोल्यूशन ऑफ अदर स्टार सिस्टम्स के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फार्माकोजेनोमिक्स। ये टॉपिक भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फार्माकोजेनोमिक्स जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है ड्रग थेरेपी को, प्रिसीजन मेडिसिन की तरफ लेकर जा रहा है हमें। फार्माकोजेनोमिक्स क्या होता है? एक स्टडी कि कैसे इंडिविजुअल का जेनेटिक इनहेरिटेंस जो उसकी बॉडी के रिस्पॉन्स टू द ड्रग्स को अफेक्ट करता है। तो ये ग्रोइंग मेडिकल एरियाज ऑफ जीनोमिक मेडिसिन और प्रिसीजन मेडिसिन का ही पार्ट है। और ये ट्रीटमेंट एक तरह से पर्सनलाइज होती है आपके जीन्स के ऊपर बेस्ड, इन्वायरमेंट पर, लाइफस्टाइल पर बेस्ड। तो इसमें कौन कौन सी जो है थेरेपीज़ अभी तो हम देख सकते हैं ऑन्कोलॉजी में, मतलब कैंसर थेरेपीज़ जो है वो टेलर की जा रही हैं बेस्ड ऑन ट्यूमर जेनेटिक्स ऑन पेशेंट डीएनए। कार्डियोलॉजी मतलब ब्लड थिनर डोसेजेस कैसे देनी है जेनेटिक वेरिएंट्स के हिसाब से। फिर साइकेट्री मतलब राइट एंटी डिप्रेसेंट्स देने हों मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स के साथ। इन्फेक्शियस डिजीज़ में भी इसका यूज़ है एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स डिज़ाइन करने के लिए। तो एक तरह से ये ड्रग सेफ्टी को भी इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ क्लीन हैंड्स। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ क्लीन हैंड्स जो है वो उसको इन्वोक नहीं किया जा सकता अगर एक पटिशनर को रिलीफ देना है, अगर उसने सक्सेसफुली क्रुएलिटी को प्रूव कर दिया है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ क्लीन हैंड्स क्या कहती है कि जो जस्टिस मांगने आया है उसके खुद के हाथ भी साफ होने चाहिए। मतलब उनको फुल ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी के साथ कोर्ट में अप्रूव कर मूव होने चाहिए। ये जो डॉक्ट्रिन है एक पार्टी को रिलीफ लेने से रोकती है अगर उसने खुद ही जो है वो अनफेयरली या फिर बैड फेथ में एक्ट किया हो बिफोर द कोर्ट। ठीक है। तो एक जो है मतलब एक तरह से आप समझ लो कि अगर आप जस्टिस मांगने जा रहे हो तो आपके खुद के हाथ भी साफ होने चाहिए। ठीक है। तो अगर आप कुछ मटेरियल फैक्ट छुपाते हो कोर्ट से जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ऊपर जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ क्लीन हैंड्स लगेगा और आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जुवेनाइल जस्टिस एंड चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट रिपोर्ट आई है जिसमें दिखाया गया है कि 55% जो केसेस हैं वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अभी तक पेंडिंग है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंडर ये बोर्ड बनाए गए हैं और ये कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये हर डिस्ट्रिक्ट के लिए बोर्ड बनाएंगी, वन और मोर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स, जिसमें या तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जुडिशल मैजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट होंगे, 2 सोशल वर्कर्स होंगे और स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं चाइल्ड ऑफेंडर्स के लिए जो कि हीनस ऑफेंसेस करते हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 16 टू 18 ईयर्स। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है उनको ऑप्शन दिया गया है कि वो हीनस ऑफेंसेस को चिल्ड्रंस कोर्ट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं आफ्टर प्रिलिमिनरी असेसमेंट। तो फंक्शंस क्या हैं इसके कि चाइल्ड्स राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट रहें थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ लीगल एड रहे चाइल्ड के लिए थ्रू द लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टॉपिक इकोनॉमी के लिए और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लगभग 3,000 करोड़ के जो है वो एग्रीमेंट साइन किए हैं कार्गो मूवमेंट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। तो ये 1986 से एग्जिस्ट करती है IWAI फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज शिपिंग और नेविगेशन के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के अंडर आता है। ये वो प्रोजेक्ट्स लेती है अथॉरिटी जो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस कर रही है करने के लिए इंपॉर्टेंट है इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट के लिए और नेशनल वाटरवेज बनाने के लिए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन मैटर्स रिलेटेड टू इनलैंड वाटरवेज के लिए एडवाइस करती है और असिस्ट करती है स्टेट्स को IWD सेक्टर में की डेवलपमेंट के लिए। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एनसेलेडस। ये टॉपिक से साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट जो है नासा के कैसीनी डेटा को एनालाइज कर रहे हैं और उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइस पार्टिकल्स के सैटर्न के मून एनसेलेडस में। एनसेलेडस सेकेंड नियरेस्ट है मेजर रेगुलर मून्स ऑफ सैटर्न में और ये ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल इट्स मून्स है। सैटर्न का 6th लार्जेस्ट मून है ये, लगभग 500 किलोमीटर इन डायमीटर है। एनसेलेडस जो है वो टाइडली लॉक्ड है विद सैटर्न और इसका सेम फेस रहता है मतलब प्लैनेट की तरफ। और एनसेलेडस मेंटेन करता है एक लिक्विड सब सरफेस ओशन थ्रू टाइडल हीटिंग, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग पोटेंशियल साइट्स हैं द सोलर सिस्टम में फॉर होस्टिंग लाइफ। और कैसीनी अगर हम देखें स्पेस क्राफ्ट क्या है, जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी का। और एक सोफिस्टिकेटेड रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट जो है वो सेंड किया गया था स्टडी करने के लिए सैटर्न को और उसके कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ऑफ रिंग्स एंड मून्स को अनप्रेसिडेंटेड डिटेल में, और 1997 में से लॉन्च किया गया था।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सनगाई फेस्टिवल। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर और इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सनगाई फेस्टिवल मणिपुर में शुरू हो चुका है। एनुअल फेस्टिवल है वहाँ का, 2010 से चल रहा है। और ये मणिपुर के रिच कल्चरल हेरिटेज को शोकेस करता है, इंडिजिनस ट्रेडिशन को शोकेस करता है। और ये म्यूज़िक, डांस और वेरियस नेटिव आर्ट फॉर्म्स के थ्रू ये सेलिब्रेट किया जाता है। स्टेट का क्लासिकल डांस डांस फॉर्म रास लीला जो है वो भी सेंटर स्टेज ले लेता है इस फेस्टिवल के टाइम पर। अब सानगाय क्या है? सब स्पीशीज़ है एक डियर की जो एंडेमिक है मणिपुर में। कल्चरल रेफरेंस है इसकी मणिपुर में। ये सिर्फ केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। मीडियम साइज डियर है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is 2025 G20 Leaders Summit. This topic is important for your international relations. So at the 2025 G20 Leaders Summit in Johannesburg, South Africa has achieved the adoption of G20 Leaders Declaration by consensus, despite the US boycott and attempts to block the text. So this was the first time that G20 summit was held in Africa. So this declaration was adopted at the start of the summit and not at the end, which is an unprecedented step. How is it made possible? Because these declarations are already negotiated and finalized by the Sherpas. So this declaration has adopted an affirmation of multilateralism. It has asserted that G20 cannot be paralyzed due to the absence of any single country, including the US. So it has reiterated commitment to the UN Charter. Okay, minimal references to Russia-Ukraine war, Gaza conflict, or Middle East tensions have been made, but single-line condemnation of terrorism has been declared. Okay, so India also ensured that global South concerns remain as a part of this document. So this document has also called for a transformative reform of the UNSC and reaffirmed its commitment to empowerment of women and girls also. And they have been they have been recognized as agents of peace. So this South Africa has made a bilateral balancing with the US while acknowledging the economic importance of the US. It has rejected claims of US regarding genocide of white farmers in South Africa. So Indian PM argued that current economic models have left many deprived of resources and caused overexploitation of nature. He stressed that there is a need to rethink development, especially as Africa remains the most affected. So he has proposed the integral humanism philosophy of Deen Dayal Upadhyay, which means holistic development of individuals in society through the integration of material and spiritual well-being. It will provide an alternative to Western ideologies like individualism, secularism, communism. Okay, so several initiatives have also been proposed by India, like Global Traditional Knowledge Repository, G20 Africa Skills Multiplier Initiative, G20 Initiative on Countering the Drug Terror Nexus, etc. So India has also engaged diplomatically with Australia and Canada to launch the uh, partnership for technology and innovation, AI, clean energy, supply chain resilience. So the declaration has also noted that trade wars are a global threat. Geoeconomic competition, conflicts, inequalities, uncertainty in global economy is paralyzing the economy. Okay, but challenges are there also because there has been no mention of Ukraine and Gaza, no uh, mention of a high interest rate for the same risk profile in developing nations, and US South Africa tensions remain. G20, which is responsible for the majority of emissions, is slow to act collectively on climate change. Okay. So the next topic is four labor codes. This topic is important for your governance section. So Government of India has notified all four labor codes, which is one of the most significant labor reforms since independence. So these codes were passed in 2019 and 20 period only, but they were not implemented because of protest by central trade unions. But now, despite resistance, center has operationalized them. So systematic reforms have been introduced. For example, first time statutory recognition has been given to gig workers, platform workers, and aggregators. Aadhaar linked universal account number will be there, which will be fully portable, which will provide fully portable benefits for migrant workers. Social security contributions, that is aggregators will be contributing 1 to 2% of annual turnover.
Mandatory timely wage payments across establishments have been made sure. Wage structure will be redefined to increase basic pay component. Women are being allowed to work night shifts, underground mines, heavy machinery operations with consent and safety conditions, of course, equal pay for equal work for them. Free annual health check will be there for workers aged above 40. Single registration, license, and return system will be there. Okay. CII has welcomed the codes as a historic milestone, but the trade unions are calling this as anti worker and pro employer. So the next topic is interstellar objects. This topic is important for your science and tech section. Recently, NASA has released images of Comet 3I Atlas, which is an interstellar object, and astronomers have determined it as billions of years old. So interstellar objects are celestial bodies which originate outside the solar system and they travel through it. These objects are not gravitationally bound to a star. They originate from outside our solar system. They move in an open-ended hyperbolic orbit, and they move at such great speeds that the sun's gravitational pull is not able to slow them down. Okay. They also provide clues about the formation and evolution of other planetary star or of other star systems. So the next topic is pharmacogenomics. This topic is important for your science and tech section. Pharmacogenomics transforms drug therapy from a one size fits all approach to precision medicine. So, pharmacogenomics is the study of how an individual's genetic inheritance affects the body's response to drugs. It is part of the growing medical areas of genomic medicine and precision medicine. And this is a treatment which is personalized based on your genes, environment, and lifestyle. It tailors cancer therapies. It is currently used in oncology for tailoring cancer therapies based on tumor genetics and patient DNA, even used in cardiology to adjust blood thinner dosages based on genetic variants. It is used in psychiatry to select the right antidepressant with minimal side effects. It is also used in infectious diseases to predict patient response to antiviral treatments and also to improve drug safety. Okay, it also improves drug safety. So the next topic is doctrine of clean hands. This topic is important for your governance section. So the division bench of the Delhi High Court has recently ruled that the principle of clean hands cannot be invoked to deny relief to a petitioner who has successfully proved cruelty. Okay, so doctrine of clean hands basically says that those who are seeking justice must not have engaged in dishonest practices themselves, so that litigants approach the court with full transparency and integrity. So it essentially means that a party which is seeking a remedy must themselves have clean hands regarding the dispute to be granted relief. Okay, so any suppression of material facts implies that disclosure of those facts which are essential to the decision making process. If you suppress them, the courts can held you accountable. Courts can hold you accountable for fraud on the court, misrepresentation, or abuse of the process of law. Okay. The next topic is Juvenile Justice Board. This topic is important for your governance section. Juvenile Justice and Children in Conflict report has highlighted that more than half of the cases remain pending with the Juvenile Justice Boards as of October 2023. So, Juvenile Justice Act has provisions that state government shall constitute for every district one or more juvenile justice boards, which shall consist of either a metropolitan magistrate or a judicial magistrate or a chief judicial magistrate with two social workers. And under Section 15 of the Act, special provisions have been made to tackle child offenders committing heinous offences in the age group of 16 to 18 years. Juvenile Justice Board is given the option to transfer cases of heinous offences by such children to a children's court, and through these boards, it is made sure that child's rights are protected throughout the process of apprehending the child, inquiry, aftercare, and rehabilitation. And it is also ensured that the availability of legal aid for the child is there through the legal services institutions. Okay. So the next topic is Inland Waterways Authority of India. This topic is important for your economy section. So Inland Waterways Authority of India has signed a series of major agreements valued at about 3,000 crore to boost cargo movement, passenger transport, and river-based tourism in the northeast. So this IWAI
came into existence in 1986 for the development and regulation of inland waterways for shipping and navigation. It falls under the Ministry of Ports. It undertakes projects for development and maintenance of inland water transport infrastructure on national highways. It also advises the central government on matters related to inland water transport and assists states in the development of this sector. And its headquarters is located in Noida. So the next topic is Enceladus. This topic is important for your science and tech section. So scientists analyzing NASA Cassini data have recently identified previously unknown organic compounds in ice particles emitted from Saturn's moon Enceladus. So Enceladus is the second nearest of the major regular moons of Saturn and the brightest of all its moons. It is the sixth largest moon of Saturn. It measures about 500 km in diameter. It is tidally locked with Saturn, keeping the same face towards the planet. Like other icy moons which orbit the gas giants, it is thought that Enceladus maintains a liquid subsurface ocean through the tidal heating. It is one of the most promising potential sites in the solar system for hosting life. So, what is Cassini spacecraft? It is a joint project of NASA, European Space Agency, and Italian Space Agency. So, Cassini was a sophisticated robotic spacecraft sent to study Saturn and its complex system of rings and moons in unprecedented detail. It was launched in October 1997 and it is one of the largest interplanetary spacecraft. Okay. So the next topic is Sangai Festival. This topic is important for your art and culture and environment section. So recently Sangai Festival in Manipur began, and it's an annual festival which was started in the year 2010 to showcase Manipur's rich cultural heritage and indigenous tradition. This festival promotes the cultural extravaganza of Manipur through music, dance, and various native art forms that are part of the Manipuri tribes and people. The state's classical dance form Ras Leela, renowned for its distinctiveness, takes center stage during this festival. So, what are the facts about Sangai? It is a subspecies of deer which is endemic to Manipur. It also has immense cultural relevance to Manipur. It is found only in Kabul Lamjao National Park, which is the largest single mass of Fumdi, and it is in the Loktak Lake. So, it is a medium-sized deer with unique, distinctive antlers, and it is critically endangered. Okay. So, these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.